Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Mohammad Iqbal from Higher Secondary School Ashpora. We have been reading this agriculture lesson for last some days. Our subtopic today is technological and institutional reforms. Dear students, as you know, agriculture is the backbone of our economy. You must be aware of this fact that agriculture has been practicing in our country for thousands of years. हाँ, जो एग्रीकल्चर है ये हमारे मुल्क का बैकबोन है जिस पर हमारी हमारी आबादी मुनहसर है और इसी एग्रीकल्चर को हम साल साल से करते आए हैं अपने मुल्क में. Agricultural development has been hindered due to sustained use of land. Its pace slowed down, though we have somewhat good irrigation resources in our country, but still we face many challenges where we don't have availability of water resources. Most of the farmers who live in Caravas, who live in remote areas on hills, mountains, they don't have good facility of water. They depend upon rainwater. Dear students, you know, if there is no rain in a month, the crop is likely to be destroyed. Though we have good irrigation resources in plain areas, but we don't have so same in in hilly areas. Dear students, agriculture, it is a great challenge for those farmers or for the country, though it has no good irrigation resources on hills or on mountains where some people live, where some farmers live. They don't have good water facilities available. For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reform. Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari, etc., were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reforms was the main focus of our first 5-year plan. दो हमारी जो सरकार है, अगरचे हमारी सरकार बहुत सारे इकदाम उठा रही है जमींदार भाइयों के लिए, उनकी खेतों के लिए, उनको लोन्स फराहम कर रहे हैं, उनको बहुत सारे मदद इमदाद दे रहे हैं, तब भी जमींदारों के लिए कुछ चैलेंजेस पोज हो रहे हैं नेचर के ज़रिए से या और किसी ज़रिए से. तो ज़मींदार लोगों का जो ये इनकम है, जो आमदनी है, इसमें बहुत फ़र्क हो जाती है, बहुत फ़र्क पड़ती है, क्योंकि किसी साल इनका फसल ही नहीं बनता है तो ज़मींदार लोग परेशान रहते हैं. Dear students, you know that the laws of the land reforms were enacted, but the implementation was lacking or lukewarm.
The government of India embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 1970s. The Green Revolution based on the use of package technology and the White Revolution Operation Flood were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. बहुत सारे इकदाम मैंने जो बताया आपको, बहुत सारे इकदाम उठाए गए, लेकिन जिम्मेदार लोग फिर भी कुछ परेशानियों के शिकार हो रहे हैं अपने मुल्क में। तो इसलिए आप ये सोचते होंगे हमारे मुल्क में थोड़ा गरीबी भी है, लेकिन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की वजह से हमारे मुल्क में कुछ सुधार आया है ज़िम्मेदारी के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से। एग्रीकल्चर से हमें अच्छा फ़ायदा मिलता है।